गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द एनकोडर एंड एनकोडर कैलिब्रेशन। व्हाट इज एनकोडर? Encoder is a devices which is normally connect with the probe and the scanner such that the position of the probe during the data acquisition that will be ensured correctly. That means what are the interpretation logic for the ultrasonics or phased array? That means the reflector position, and that reflector position we are analyzed in the respects of SAD and PA value, that is surface distance, depth and beam path. Now the position of the probe with respect to the reflector, how it will be ensured that your data which has been acquisition is done into the machine, and in you are interpreting a data, that data is showing the correct locations of the probe. So the location of the probe that will be ensured if we are using the encoded inspection. So encoder calibration, so when we are using the encoder to ensure that the position of the probe is correct, so we need to make the calibration when we are using the encoder. So encoder calibration in the phased array ultrasonic system machine synchronize the physical distance that the probe travels with the digital mapping into the display, ensuring the accurate 1D or 2D mapping, जिसको हम लोग like the C scan. द बेसिक स्टेप कैसे हम लोग इस कैलिब्रेशन को कंडक्ट करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग वीडियो में आप देखेंगे, बट इन जनरली सपोज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप जो इनकोडर यूज कर रहे हैं, इनकोडर का नेचर, दैट मीन्स व्हाट इज द पोलैरिटी, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इनकोडर, इनकोडर का टाइप क्या है, जैसे मिनी व्हील टाइप ट्रांसड्यूसर एनकोडर्स है, उसका रिजोल्यूशन क्या है, आपका स्कैनिंग स्पीड क्या है। ऑल दिस नेसेसरी इंफॉर्मेशन नीड टू बी गिवन इनटू द इनपुट इनटू द मशीन। सो कॉन्फ़िगर द सेटिंग, पहले आपको सेटिंग का कॉन्फ़िगरेशन करना है। नेविगेट टू योर मशीन, स्कैन सेटिंग में पहले जाना है एंड देन एंश्योर द इंस्पेक्शन टाइप टू सेट द एनकोडर रादर देन टाइम। उसके बाद आपको डिस्टेंस सेट करना पड़ेगा, दैट मीन इन व्हिच डिस्टेंस यू नीड टू बी एंश्योर दैट द पोजीशन ऑफ द प्रोब इज करेक्टली डेजिग्नेटेड। सो इसके लिए मिनिमम आप 300 mm एज पर द कोड रिक्वायरमेंट, मिनिमम 300 mm का जो डिस्टेंस है, that range you need to be calibrated during the encoder calibration. Then encoder का position को आपको 0 enroach करना पड़ेगा। That means when you are going to start the movement of the encoder, you should be mark the starting point as a 0, and then we will move the scanner with the encoder up to the maximum 300 mm, and the data that will be acquisition mode, and the data will be saved in the form of C or B format. So total the scanning length will be exactly 300 mm as per the physical verification you have been marked from 0 to 300. So calibration, when it will be ensured that the machine is showing the 300 mm running path of the probe with respect to the encoder, we need to be accepted and the encoder calibration will be done. So encoder calibration is ensured the correct position of the probe during the data interpretation into your C scan data review and others. So in corresponding video आप देखेंगे how the encoder calibration will be done into the phased array system. Okay, thank you.